A hearty welcome to one and all. Our Honorable Chief Guest, respected Architect S.D. Sharma Sir, all the esteemed dignitaries, our strong supporter from White Falcon Publishing, all contributors, media people, special guests, and the lovely audience, and the man behind the today's show, most respected and very humble Architect Surinder Bahga. I welcome you all to today's book launch. A hearty welcome. Today is a day very well chosen for this August ceremony, as today we also celebrate National Youth Day to honor the teachings of a great spiritual leader, Swami Vivekanand, who is believed to be inspiring to our youth. Similarly, the endeavor of this book is a humble effort to apprise all in architecture fraternity of contemporary architecture in India from the lens of architect Bahga, a pioneer in the field of architecture. The book, as you all know, Form Follows Roots, Architecture for India, 1985 to 2021, authored by architect Surinder Bahga, edited by Dr. Ebru Tokmesi, forward by Professor Robert Harbison, and published by White Falcon Publishing. The publication of this book has been made possible by the generous support of Council of Architecture, New Delhi, India, and Saakaar Foundation, Chandigarh. I am sure everyone knows that following independence, numerous writers published books that provided extensive documentation of modern Indian architecture, and to name a few books such as After the Masters, Contemporary Indian Architecture by Vikram Bhatt and Peter Scriver, Architecture and Independence, The Search for Identity, India 1880 to 1980 by John Lang, Mickey Desai and Madhavi Desai are some of them, which we all read and refer to. Another book, Modern Architecture in India, Post-Independence Perspective, written by Chandigarh-based architects, architect Sarabjit Bahga, Surinder Bahga and Yashinder Bahga. This book includes 98 projects completed between 1947 and 1990. But after this, the architecture fraternity witnessed very few publications on modern architecture, specifically talking from 1980s. Two books that received appreciation, popularity, are well referred and read include Architecture in India since 1990, written by Rahul Mehrotra, which features a selection of 60 architects' works. Another book by architect Jagan Shah on contemporary Indian architecture elaborates on 20 contemporary architects, most of them who were in the second decade of the professional practice. So friends, when the idea of this book was conceived by the author, he could refer to a dozen monographs of India's leading architects, to name a few: architect Balkrishna Doshi, architect Charles Correa, Raj Rewal, Anant Raje, Christopher Benninger, and some more, but exploring that most of the existing literature on India's modern architecture was restricted to either bigger cities or elite projects. The idea of documenting contemporary architecture from 1985 became stronger. It's a humble effort by architect Bahga to document all architecture that was practiced and built in the country from that period. For a culturally rich country such as India, the vastness of the subject of architecture and the pace of development needs volumes of books to cover, and this book is a humble attempt in the same way. Architect Bahga is someone who needs no introduction. He is a multifaceted personality. In addition to being a well-known author, educator, planner, architect, he's also a scholar. He's well regarded for his outstanding philanthropic approach. After the idea of writing this book was conceptualized, then began a journey. I call it a journey because if I talk about myself, sir, we had the first discussion at the end of 2016, right? So 2017, I made the first folder on my laptop
book by architect Bahga, and I am honored to be a part of this book. So today we all stand in 2024, and it has almost taken us 7 years. So it's a long journey, and as we move forward, I will unfold some of the secrets of this journey. So when he decided, when he thought of this book and he started working on it, it began initially with compiling the work that was done in the country by him throughout his professional life, his design principles, methodology, creating a visually appealing and harmonious design that meets the best practical needs of the users. So the book today, if you look at it, today it is a culmination of dedication, countless revisions, I would say, and a roller coaster of emotions. क्योंकि जब ये विचार पहली बार सर के दिमाग में वर्षों पहले एक बीज की तरह उभरा, समय के साथ विकसित हुआ, पुस्तक को बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगी. एंड टुडे ही स्टैंड्स हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू प्रेजेंट हिज बुक, and believe me, it was an arduous but yet a fulfilling journey of bringing this book to life in spirit and good wishes. The initial excitement of starting a project of this magnitude soon gave way to the harsh reality of writing process. Revisions became a constant, and with each draft unveiling a new layer of the draft and refining the characters. I still remember I used to travel from my college to Sir's office to discuss, and generally taking the pressures of my institute and then reaching there. It used to be a long distance from Rajpura to Sector 17, moving through all those traffics. और कभी कभी मैं लेट भी हो जाती थी तो मैं सर को मैसेज करती थी कि सर 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, 15 मिनट में पहुंच रही हूँ. और कभी कभी मैं जो करके लेके जाती थी वो सारा स्क्रैप ऑफ भी हो जाता था, फिर से करना पड़ता था. So the first draft served as a rough canvas, a skeleton of creation that was aimed to see light in the coming years. Every section, every chapter that you will see in the book was carefully composed, जो पूरी कहानी को बेहतर बनाते हुए उसके एसेंस को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. And while doing revisions, the first draft, when it was ready, we circulated it, and it received comments, suggestions, feedbacks from multiple people, obviously, which sir would narrate and sir would talk about. But it was an entire process of distillation. We all are familiar with science, so I would say distillation, stripping away the extraneous elements to reveal the core of the narrative. So आज पीछे मुड़कर देखने पे मुझे लगता है it appears as a beautiful patchwork, a quilt of emotions stitched together with threads of determination and creativity. I am honored to stand before you, obviously for today's event. I have so many dignitaries here, but also being a part of this book, I'm honored that he laid the responsibility of a section, which was the introductory, the contemporary architecture in India, on my shoulders. And he trusted, he believed that I would be able to do justice to his dream, his invaluable creation. So the chapters gradually, sir, will unfold. मुझे ऐसा लगा when I started the project कि किताब लिखना एक बहुत लंबी और curvilinear road, as we say in architecture. I felt it like that. The first draft, as I mentioned, I started in 2017 when I had the first discussion with him. It wasn't easy. I wrote certain things, I read them, then I rewrite those things. So लिखना, पढ़ना, फिर से लिखना और उसको फिर से पढ़ना. So each draft was like the piece of a jigsaw puzzle fitting together to tell the story of how architecture in India has changed over the years. And something for which I am grateful to sir, I had to dig into the history of architecture in India after India gained independence. It was like exploring a maze, trying to understand how things evolved. सफ़र आसान नहीं था, किताब लिखना मुश्किल काम था, रेत के महल की तरह था. हम आकार देते थे, फिर लहरें कुछ दूर ले जाती थी और उसके बाद हम फिर से उसे एक नया आकार देते थे.
कभी कभी जब मैं सर के ऑफिस में गई, आई रिमेंबर, और सर ने जब बहुत सारे करेक्शंस करा लिए, उसके बाद करेक्शन दिया, तो मैं नाराज़ नहीं थी, पर सर को लगा कि मैं नाराज़ हो रही हूँ। और सर आज भी जब भी मुझे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि अब बुक आ गई है तो अब तो तुम नाराज़ नहीं हो ना कि मैंने इतनी सारी रिविजन्स कराई। बट मैं नाराज़ नहीं थी। आई लिटरली ओ ग्रैटिट्यूड टू हिम फॉर दैट, बिकॉज आफ्टर दोज रिविजन्स इट हैज़ रियली कम आउट एज अ वंडरफुल पीस। सो विद एवरी री राइटिंग मैं कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर के विवरण में गहराई से उतर गई, and I learned about the design ideas, I learned about global influences on architecture in India. I also learned about how it changed the way buildings look and the role of individual architects in shaping everything. 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज ये किताब आप सबके सामने तैयार है। फॉर मी, फॉर हिम एंड द एंटायर टीम, इट्स नॉट जस्ट अ बुक, it's a story of my journey, learning, our journey, and our love for the topic, our passion. इसे लिखने से कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर को देखने का मेरा नज़रिया ज़रूर बदल गया, और शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं ये भी बदल गया। पूरा अनुभव एक मेमोरेबल सफ़र की तरह लगा मुझे, जिससे मैं और कहानी एक साथ आगे बढ़े और अंत में कुछ अनोखा बना रहे थे। We had many people who supported us. We had many people who were a part of this book, though everybody is not here today. But on behalf of all those, I extend gratitude to Architect Bahga for making us part of this prestigious project. And we would like to share some of the feedback, some of the comments from some of the contributors. Can you please play one of the videos? The third chapter of the book has been written by Dr. Elif Berna Unal, who's a conservation architect from Turkey. So we have a message. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Elif Berna Unal, who is one of the chapter owners of the book launched today, and I'm sending this message from Luxembourg. Instead of sharing this video, I really wish I would be present there and make this speech by myself on the stage. However, due to some personal circumstances, it was not possible for me to participate you in person. Instead, I'm sharing this video with you. First of all, I would like to take this opportunity to express my great excitement to be a part of this book, and my gratitude for architect Surinder Bahga, who asked me to write a chapter for this meaningful resource. Without his proposal and guidance, it might not have been possible for me to be involved in the creation of such a meaningful work. Also, I would like to thank the editorial board, who put great effort for the improvement of the manuscripts, carefully compiled them, and created the final outcome. Furthermore, I would like to express that it was a great honor for me to be involved in the creation of this informative, meaningful, and useful resource, which I believe that it will be very helpful for the architectural students, experts, and professionals, not only in India, but also for the ones who are interested in Indian architectural field or studies around the world. I do not want to take a lot of time, but before concluding my speech, I also would like to thank each and everyone who put great effort for the organization of today's event, as well as the ones who participated in it today. I really hope that this book will reach out to so many people, and even the future generation will find it helpful. Thank you very much. Thank you for the video. As we move forward, I'll keep unfolding stories and experiences. But as we proceed with today's event, I would now like to invite Ms. Navsangeet Kaur for a welcome address. Ms. Navsangeet Kaur is an MBA from Symbiosis Pune and a university gold medalist in her BSc and MSc degrees at Punjab University. After her 2.5-year stint at Reliance Industries Mumbai, she founded White Falcon Publishing in 2014.
In the last 10 years, she has spearheaded White Falcon to make it a new age technology driven publisher offering quality services to authors in more than 40 countries. Ma'am, please. Good morning. Actually, it is good noon. Good noon, distinguished guests, authors, contributors, members of the media, ladies and gentlemen. It is my absolute pleasure to welcome you all to the special book launch event organized by the Saakaar Foundation, White Falcon Publishing, and supported by the Council of Architecture. We are especially honored to have among us today, as our chief guest, the renowned architect, respected S.D. Sharma sir. Sir, your pioneering work in the contemporary architecture is an inspiration for all of us. Your presence today lends great credence to this event. We have amidst us Dr. Harveen Bhandari, Dean Research and Scholastic Development at the Chitkara School of Planning and Architecture. Ma'am, your long association with this book project has been invaluable, as you rightly mentioned in your speech. I also warmly welcome all our friends from the media who are here to cover this event and help take the book message far and wide. We are grateful for your support. Last but not least, a big and heartfelt welcome to all our distinguished guests who have taken time out from their busy schedules to come and enhance today's program. But before we proceed further, I would share a few words about White Falcon Publishing. White Falcon Publishing was founded in 2014, and in these 10 years, we have helped publish thousands of books for authors from more than 40 countries. Many of these books became bestsellers and award winners. White Falcon has emerged as a new age technology-driven publisher offering quality services to its authors. To nurture creativity and writing, we have been running literary contests since the last 6 years. For example, Literati, the South Asian Award for Microfiction, Chitti Sarhad Par Se for writers from India and Pakistan, Summer and Winter Writing Contests, Indo-Pak Photography Contest are a few such initiatives taken by us. I really hope that we at White Falcon continue to offer the best of services to our authors. With this, I would again extend a warm welcome to all of you, and we look forward to your participation. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now we move on to the most awaited moment of today, the book unveiling ceremony. So for this, I would request our Honorable Chief Guest, Architect S.D. Sharma, to please be on the stage, sir. I would request Bahga, sir, to please. I would also request Architect Sarabjit Bahga to be please on the stage. Architect Yashinder Bahga. Miss Navsangeet Kaur, ma'am. So we would first begin with the book unveiling ceremony. Can we please have the books on the stage? So we can please stand up and let's unveil the book.
for the audience. Well said by a writer. एक समय में एक काम करो और करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो ताकि बाकी सब कुछ भूल जाओ. So a huge round of applause for Sir and the book. It's been beautifully crafted, and as I said, every section is a piece in itself. This would not have been possible without the support of Council of Architecture. The book also has special messages by architect Habib Khan. Thank you so much. You may please take your seats. Introducing our chief guest of the day. It's a privilege to do that. And introducing him is like doing a script of a motion picture. Torn through the partition days, virtually with no resources, architect Sharma enrolled himself in the team of architects in the Capitol project of Chandigarh. By the dint of his sheer hard work, he rose to assist Corbusier and Pierre Yondre in the projects, especially the Museum and Art Gallery Chandigarh. His creative potential was evident right from the beginning, as his thesis was considered exemplary by the jury. The fact that Le Corbusier's museum was handed over to him for completion after his untimely death speaks of the person's drive, enthusiasm for the built forms. His popularity among his contemporaries is quite evident from the many certificates and interesting notes that have been written for him over the past almost 5 decades of his career. So I would request Sir to be pleased on the dais and enlighten us with a few words. My greetings to all of you. I think first of all, I congratulate architect Surinder Bahga for valuable contribution to the architecture literature by authoring this book. I think there can't be any better service to the profession than praising the ideas which have been all around talked by several architects all over the world, and to phrase them in a book. I know writing is not a very easy job. He has taken about 8-10 years, doesn't matter. It takes nothing less than few years for writing anything. This is an addition to the books written by these two brothers, Surinder Bahga and Sarjit Bahga. They have written, I think, 5-10 books. This is the maximum contribution to the literature of architecture by these two brothers. I think not even seniors could write so much in their lifespan.
I think the book which is written out of those 5-10 books, this Le Corbusier and Paris-Honoré footprints on the sands of Indian architecture, is it okay? Maybe no, it is 8-10 years, but it's still wanted today. And it is, I have seen abroad also that this book is internationally referred. When anybody talks about Chandigarh, can't escape peeping into this book for several references, for ideas, and what was Chandigarh about, and what were the makers, those who brought in a big way modernism to this country, I must say. And this is a sort of a contribution of these two brothers to the professional literature. Surinder Bahga is very sensitive and imaginative architect. He has done many award-winning structures. I proudly say that he worked with me for a while, and the projects we worked together also brought us awards. And afterwards, I think he has developed a habit of making only award-winning projects. So that's a good habit. You must continue with this. He had some very responsible positions in Indian Institute of Architects, Council of Architecture. And not only that, he has something to do with politics also. And that's very, very great thing. Because as I got this book 2 days before, and I peeped into it, and I got a very worthy quote by none less than Edwin Lucian himself, that there can never be a good architecture and good architects. Rather, the greatest architecture, greatest architects without greatest patrons. And this is what happened with Chandigarh also. Jawaharlal Nehru patronized the city. He gave freedom to Le Corbusier to do whatever he wants. I think he couldn't have those monuments, Sumit, without the support of Pandit Nehru. So, and this book I think is an excellent example of any material which can be written about the profession. I think there are 12 chapters. 12 chapters. Each chapter is very well written by sort of diverse signatures maybe, but talking about one unified idea, which is to understand the glorification of. And I said that Surinder Bahga's, I emphasized his being in the politics, like Pillu Modi. He got us the Architects Act enacted by the Parliament. And these politicians and those who are responsible of funding, asking for large projects, should be told about the myth
the notions, the connotations of the art form and how this profession serves the society, they must be told very well. And the administration should know, administrators should know, and the people, those who build, they should also know this, how the profession works and how much it helps the society. So I think ultimately I also got into, just a moment. Yeah. Ultimately, to sum it up, a poet says about the architecture, आपके बज़्म करामात में शामिल होकर, यानी he is addressing the architect. उसने तामीर के पत्थर भी मजा देते हैं. That's one of them. This is the richness of architect, which we often know and talk about by all architects, that by architecture we can infuse life into the inert material. Well, that is okay, but this poet sum it up in 2 lines. Well, thank you very much. And once again, my congratulations to Surinder Bahga, and my blessings and best wishes, and wish that he continues adding valuable material to the architectural literature. Thank you all. Thank you, everybody. Thank you so much, sir. Sir has always been a source of inspiration for all of us, and he makes it a point whenever we invite him for such occasions, he's always there to support us. Surinder Bahga sir also received a number of messages from many of the renowned architects, architect Christopher Charles Benninger, architect Kapil Setia, Professor A.J.K. Menon, architect Shirish Beri, who could not be here with us, but they have extended their heartfelt congratulations. They say, please continue making contributions to our profession and our country. You never cease to amaze us with your prolific work. And the virtue of your long years of immense hard work and passion will manifest through this book. So congratulations, sir. I think before we proceed with the felicitation of our guest, since I am on the dais, I can take the liberty of one picture with the panel. You come in the center. And you hold the book. You hold the book. I would now request architect Sangeet Bagga Mehta ma'am to please be on the stage and felicitate architect S.D. Sharma sir with the bouquet. Please, ma'am.
Thank you so much, sir, for being a part of today's event. I would now request architect Sangeet Sharma, sir, to please present a bouquet to architect Surinder Bahga. I also request architect Savneet Kaur ma'am to please present a bouquet to architect Surinder Bahga. Mr. Jasjot Singh, who is a very active part of Saakaar Foundation, has also helped in many ways as a contributor. I would request, sir, to please present a bouquet to architect Sarabjit Bahga, sir. Thank you so much. I heartily acknowledge the presence of architect Sumit Kaur ma'am amongst us, who's taken out time and be here with us. Thank you so much, ma'am. Extremely happy to be here for the launching of this book, which is a very valuable addition to the architectural literature of the country. ठीक है और सर पढ़ने में कैसी लगी बुक आपको? बुक बहुत बढ़िया है, इसके कंटेंट्स बहुत रिच हैं, आर्किटेक्चर रिच, जो कि ये रिवील करते हैं कि आर्किटेक्चर थ्रू आउट द कंट्री, इंडियन आर्किटेक्चर कितनी रिच है, ये इस किताब में पता चलता है। और वो वैसे भी जो हमारे प्रोफेशन में डे इन डे आउट बात होती है मॉडर्निज्म की, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर की, फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारी बातें की गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वैल्यूबल किताब और बहुत अच्छी किताब है, विच मस्ट टू रीड फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, फैकल्टी मेंबर्स, आर्किटेक्ट्स प्रैक्टिसिंग और अदरवाइज, एंड इवन फॉर नॉन आर्किटेक्ट्स। ये किताब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये बुक लॉन्च हुई है और मैं इसके लिए बहुत मुबारक देता हूँ।
प्रोफेसर आर्किटेक्ट श्री सुरिंदर बागा। यूरोपियन आर्किटेक्ट इज द बेस्ट आर्किटेक्ट माना जाता है, तो हाँ, क्या ऐसे कवर कई नहीं वह कई बार किताब में बताया गया है कि जो फ्यूजन होता है कभी वेस्टर्न आर्किटेक्चर का, इंडियन आर्किटेक्चर का, जो साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो इस किताब में जिक्र किया गया है, और वो बहुत बहुत अच्छा है सब आर्किटेक्ट को जानने के लिए। चंडीगढ़ थोड़ा सा यूरोपियन आर्किटेक्ट से थोड़ा इन्फ्लुएंस है, आपको पता ही होगा। तो चंडीगढ़ और ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच आर्किटेक्ट को मिला के अमेलगमेशन है, तो आपको क्या लगता है कि सर फ्यूचर में जो यहाँ आबादी बढ़ रही है ट्राई सिटी की, उस हिसाब से आर्किटेक्ट को कवर कर पाएंगे? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि नहीं इधर आ जाते हैं। नहीं, कोई नहीं, आप बैठे रहो। सर पहले तो ये बताइए किस तरह से हाँ जी सर, कैसे है? मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में 3 तरह की आर्किटेक्चर होती है। एक तो वो है जो बहुत रिच लोगों के लिए करी जाती है, जो आज तक सारी किताबों में डॉक्यूमेंटेड है, या फिर लो कॉस्ट आर्किटेक्चर है, जो बहुत लो कॉस्ट टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है, जो केरला साइड में बहुत ज़्यादा की जाती है। हमारी जो बुक है उसका फोकस है जो मिडिल क्लास आर्किटेक्चर है, जो छोटे टाउन्स के में काम होता है, छोटे कस्बों में होता है, तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए होता है। तो जब हम किसी कस्बे में काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वहाँ ना तो ट्रेंड ठेकेदार मिलते हैं, ना ट्रेंड स्किल्ड लेबर मिलती है, ना वहाँ मशीनरी होती है, ना इक्विपमेंट होता है। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी प्लानिंग इस ढंग से करें कि वो गांव में मकान बन रहा है तो वो ठीक से बन पाए, क्योंकि ज़्यादा हाई फाई काम करेंगे तो वो फिर गांव में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ली काबूजिया की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल मॉडर्न लाइंस पे, स्ट्रेट लाइंस में हैं, उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। वो तो अब वक्त के साथ थोड़ा चेंज तो होता ही है, होना भी चाहिए, लेकिन उसकी जो इसेंस है, जो उसकी बुनियादी ढांचा है, वो नहीं खराब होना चाहिए। कैसे आपके मन में विचार आया कि ऐसी बुक लिखनी चाहिए जो आम लोगों तक पहुंचे, इसके बारे में बता दें। जैसे मैंने बताया कि मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में बहुत सारे छोटे जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेशनल लाइमलाइट में नहीं आ पाता। किसी गांव में मकान बनाना और दिल्ली में मकान बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस चीज़ को, और आप सब जानते हैं कि 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, तो जो गांव में काम हम करेंगे तो आई थिंक वी आर केटरिंग टू 70% जो लोग हैं उनको हम केटर कर पाएँ। पहले भी कोई किताब लिखी है या इसके बाद कोई किताबें पहले भी लिखी हैं, बहुत सारी लिखी हैं और आगे भी लिखेंगे। हमारी एक किताब है मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, वो 85 तक थी, हमने 85 से अब तक की अब लिखी है। सर क्या बताना चाहते हैं आप किताबों के, क्योंकि अब युग जो है बदल चुका है, किताबों का युग खत्म हो चुका है, किस तरह से आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं किताबों के लिए? एक तो बहुत सारे मटेरियल्स बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी हैं, लोगों की हैबिट्स बदल चुकी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं और घरों के डिज़ाइन बदल चुके हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं, तो उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है आज की डेट में। थैंक यू।
Before we proceed, can we have the video by a member from the editorial team, architect Assis Prab? Very well. Excellent. She's a part of the editorial team, architect Assis Prab, who recently moved abroad. Volume, please. Valuable piece of writing that he has produced. Hello everyone, I am Assis from Melbourne. I would like to extend my congratulations to architect Surinder Bahga for this valuable piece of writing that he has produced. Form Follows Roots is an elaborate account of the Indian architectural journey that efficiently covers the gap in the formal knowledge about the progress of Indian building design, construction, and technology that has occurred since 1985. Once again, I appreciate the time and effort Bahga sir has dedicated to share his experiences situated within his practice and insights on the overall architectural development of the country. It goes on to show his perseverance and dedication to the architectural practice and research. So please accept my sincere appreciation for your tireless efforts and contributions. And this book shall be an integral point of reference for the future research in architectural practice, and no doubtedly, it will be a treasure for the architecture and academic research for years to come. I recommend this book to every architectural student, faculty, practitioner, researcher, and enthusiast who has a sincere interest in the evolution of architecture in India in the past few decades. I wish you all the best and thank you so much. Thank you. Another wonderful message that I would like to share with all of you, which is by Dr. Mustafa Var, Professor, Yildiz Technical University of Istanbul, Turkey. Ladies and gentlemen, I am Mustafa Var, a professor at Yildiz University, Turkey. Let me express my excitement for the launch of this book, which summarizes the influential architecture and landscape architectural projects in India implemented between 1985 and 2021. I am grateful to be part of this book, as I think it will be a very useful resource for architecture students and experts in India as well as around. I would like to thank my friend, my brother, architect Surinder Bahga, who asked me to write a chapter for this book, which is titled as Exploring Tourism. Through his projects, research and presentation, architect Bahga continues to the architectural field not only in India, but also around the world. 2 exhibitions and 3 conference presentations that he made in Turkey were some of the proofs of his global contribution that I have personally witnessed. Once again, I congratulate him for this architectural project designed after 2021. परिंदों को मिलेंगी मंजिलें यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं. Dear audience, the book comprises 12 chapters by different authors, for which I would like to call upon architect Surinder Bahga himself to unfold the contents of his book, share with us his heartfelt emotions while penning and compiling the book. आज सर अगर आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपका जो सफ़र रहा, हम उसमें से कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से सुनना चाहेंगे. So I welcome and hand over it to architect Surinder Bahga. Good morning to all of you. SD शर्मा सर मेरी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात करने लगे थे, थोड़ी बीच में रह गई, मैं पूरी कर देता हूँ.
मेरे को एक दोस्त पूछने लगे, जो आप पॉलिटिक्स करते हो कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ, तो इसका आपको क्या फ़ायदा होता है? तो चड्ढा साहब आपको भी बता दूं, आपको शायद आइडिया नहीं होगा। एक फ़ायदा अभी तक हुआ है टोटल, वो ये है कि कभी पुलिस वाला गाड़ी रोक ले, रेड लाइट पे क्रॉस हो जाए, तो मैं बोलता हूँ मैं सो एंड सो हूँ, तो मेरा चालान नहीं होता। बस एक ही फ़ायदा है, और कोई फ़ायदा नहीं। मैं देख रहा हूँ संगीत सर को थोड़ी जेलसी हो रही है आज। कोई बात नहीं सर, कभी जब आपकी बुक रिलीज हुई थी मुझे भी हुई थी। चलो, इन क्विकली इन 10 मिनट्स आई विल ब्रीफ इस बुक में क्या क्या है। 23 years ago हमने इस बुक का आइडिया कंसेप्चुलाइज किया, तो आपको यकीन नहीं होगा कि इस बुक को लिखने में मुझे 23 years लगे। और अगर आप बजट की बात करेंगे तो इट कॉस्टेड मी 22 lakhs। सो बुक लिखनी बहुत मुश्किल काम होता है, इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है, फिर बुक बनती है। तो पहला चैप्टर was written by Dr. Harveen Bhandari. So I think for nearly 4 or 5 years we were working on this chapter. So in this chapter we have mentioned के पिछले 35-40 साल में आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क आया है। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हिंदी के बहुत सारे पत्रकार दोस्त बैठे हैं, तो उनको आसानी होएगी। तो विमेन आर्किटेक्ट्स का रोल बहुत सारा आर्किटेक्चर में बढ़ गया। पहले 35-40 साल पहले कोई लेडी काम करती थी, आजकल मोर देन 60-70% लेडीज आर वर्किंग। तो वी हैव ट्राई टू डॉक्यूमेंट दैट। एंड फिर बहुत सारे फॉरेन आर्किटेक्ट्स का रोल बढ़ गया इंडिया में, वी हैव ट्राई टू डॉक्यूमेंट दैट टू। तो इस चैप्टर में हमने कनविंदे का, दोषी का, कोरिया का और राजरवाल का, वो सारे काम हमने इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। चैप्टर 2 में जो अदर देन प्रैक्टिस जो मैंने काम किया है, आई ट्राई टू कवर इट अप। ये काउंसिल ऑफ चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जब मैं काउंसलर था, तो मल्टी लेवल पार्किंग का जो प्रोजेक्ट है वो मैंने कंसेप्चुलाइज किया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। और वो डिज़ाइन गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का है, बट आई प्लेड ए बिग रोल टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड and it costed us about 50 crores. Then मनी माजरा में जो, पीछे चलना बेटा, मनी माजरा में जो अंडरपास बना है वो भी हमने कंसेप्चुलाइज किया। मैं अपने ऑफिस से बंदे भेज के उसको डॉक्यूमेंट करवाता था, फिर गवर्नमेंट को कन्विंस कराया, रेलवेज को मैंने कन्विंस कराया, फिर वो बना। बहुत मुश्किल से बना, नोबडी वाज एग्रीइंग टू इट। देन 49 में एक स्कूल बना है जिसका कोई बाउंड्री डिस्प्यूट था मोहाली के साथ, वी गॉट इट मेड। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में कुछ टेक्निकल फ्लॉ था बहुत बड़ा, वो बन नहीं पा रही थी पिछले 20 ईयर्स से, वो हमने बनवाई। और चंडीगढ़ सेक्टर 17 में जो फ्लाईओवर है वो भी हमने बनवाया। ये 4-5 बड़े काम हैं जो मैं कर पाया इन चंडीगढ़ ड्यूरिंग माय काउंसलरशिप। उसके बाद हमने बहुत बड़े बड़े लेवल के सेमिनार्स किए। इस लेवल पे सेमिनार्स किए कि पंजाब 22nd पोजीशन पे था एनर्जी कंजर्वेशन की अवेयरनेस में इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने प्लीज थोड़ा, तो हंड्रेड्स ऑफ सेमिनार्स हमने पंजाब में करवाए, गांव-गांव में कराए, पंजाबी में कराए, हिंदी में कराए, लोकल प्रेस को इन्वॉल्व किया। तो उस चीज़ का ये रिजल्ट मिला कि आज पंजाब नंबर 1 पे है इन द होल कंट्री। फिर बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं
उनको बुलाया चंडीगढ़ में, मेगा से अवार्ड विनर्स को बुलाया, एम्बेसीज को इन्वॉल्व किया। इसके अलावा हमने आर्किटेक्ट्स के ऊपर एक बहुत दोष लगाया जाता है कि आर्किटेक्ट्स दे आर नॉट वेरी सोशल, तो कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हमें सुनने को पड़ती है। उससे प्रेरित होकर हमने कुछ ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए, यू कैन सी द फोटोग्राफ्स। देन हमने ट्री प्लांटेशंस करवाई, यू नो आई मेट ये फॉरेन के मेयर्स हैं, जहां मैं इटली में, वहाँ न्यूयॉर्क में जाके मेयर से मिला, उनसे समझा कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी वर्किंग देखी। तो जो भी सिटी में हम कर पाए वो हमने किया एज ए काउंसलर ऑल्सो। नेक्स्ट, चैप्टर 3 इज written by Dr. Elif. She is based in Luxembourg and she is associated with me from her student days. So I sent her the material and she worked for a year or so to put it together. इसमें हाँ जी, इसमें हमने जो भी एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं वो फीचर किए हैं। एंड not only we are not highlighting our own work, we in the brief of each chapter we have compiled that बाकी आर्किटेक्ट्स ने एजुकेशनल बिल्डिंग्स में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा एलेबोरेट कर दिया, बाकियों को वी हैव कवर्ड इट अप। वी हैव फीचर्ड 48 प्रोजेक्ट्स इन डिटेल with plans, elevation sections, and more than 100 projects of Rajwal, Doshi, Korea, they are featured in brief to make a history of it. जितने भी monographs architects के हैं, they are not more than 12 in numbers. तो उसमें मैं एक जो कमी देखी, खामी देखी, वो ये थी कि वो अपने प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं लेकिन उसका नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या लिंक है वो नहीं बन पा रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बुक होना चाहिए जिसमें थ्योरी भी मिक्स हो और अपनी भी बात कही जाए। सो जो इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं उसकी जो वर्ड की लेंथ अगर मैं काउंट करूं तो 80,000 वर्ड्स और सो मैक्सिमम बड़ी बड़ी बुक्स की वर्ड लेंथ है। हमारी जो किताब है उसमें 1 लाख वर्ड है, 48 प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे स्केचेस हैं, 400 प्लस फोटोग्राफ्स हैं। तो बहुत कंसाइज तरीके से इसको कंपाइल किया। इतना मटेरियल होने के बाद भी यू कैन सी इट्स वेरी कंसाइज, नॉट वेरी थिक। चैप्टर 4 में हमने जितने भी रिलीजियस बिल्डिंग्स इंडिया में बने हैं जो काबिल तारीफ हैं वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं और आर्किटेक्ट्स के भी किए हैं जो हमने खुद बनाए हैं। नेक्स्ट, कुछ चर्चेस, कुछ टेम्पल्स, कुछ गुरुद्वारास, कुछ मॉस्क जो हम लोगों को बनाने का मौका मिला, हमने वो इसमें फीचर किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। चैप्टर 5 इज रिटन बाय ए प्रोफेसर फ्रॉम इस्तांबुल, ही इज डॉक्टर मुस्तफा वर्ड, एंड उन्होंने ही स्पेशलाइजेज इन लैंडस्केप। सो जो भी हमारा लैंडस्केप से रिलेटेड या टूरिज्म से रिलेटेड काम था वो मैंने उनको दिया, तो हमने उसको कंपाइल किया। ये लैंडस्केपिंग में जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हमने उसमें कंपाइल किए हैं। नेक्स्ट, चैप्टर 6 इज रिटन बाय जशिंदर, माय कजन ब्रदर। ही वाज पार्ट ऑफ साकार फाउंडेशन फॉर लॉन्ग मैनी ईयर्स एंड इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है और आई रिक्वेस्टेड हिम कि ऐसे ऐसे कुछ काम करना है। तो यूथ हॉस्टल्स का जो बहुत सारा काम है, हमने 17 यूथ हॉस्टल्स ऑल ओवर इंडिया बनाए, उसमें बहुत सारा जो मेजर काम है वो जशिंदर ने किया। तो मैंने बोला कि आपने काम किया तो आप ही इसको कंपाइल कीजिए, तो ही वाज द राइट पर्सन टू डू इट। तो इसमें सारे इंडिया में जितने भी यूथ हॉस्टल्स हैं हमने वो कंपाइल किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे कह रही थी कि एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन बना दो कॉम्पैक्ट सा जो हर साइड पे फिट आ जाए, तो आपको 17 की फीस मिल जाएगी। और मेरी जगह संगीत होते तो बना देते और ख़त्म कर देते। मैंने सोचा नहीं, हम अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे, अलग अलग एस्टीमेट बनाएंगे, क्योंकि फिर हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अभी अभी मुझे पता चला कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इज़ कंटेम्पलेटिंग कि
एग्रीकल्चर के फील्ड में जितना भी काम हुआ है उसके ऊपर कोई लिटरेचर कहीं नहीं अवेलेबल, बिल्कुल भी नहीं। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में कहीं बात चल रही थी तो दे वर थिंकिंग कि इसका भी कुछ काम होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने जो भी इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, शायद कि काउंसिल के किसी काम आ जाए। तो हमने इसमें अपना भी और लोगों का भी, सरबजीत बागा सर ने बहुत सारा काम किया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, हमने उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। और जो अपने राजेश साहब ने किया है, जहाँ और आर्किटेक्ट्स ने किया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इंडिया में, हमने उसको सारे को इसमें डॉक्यूमेंट किया है। और मेरे कोलीग प्रवीण चोपड़ा जो एग्रीकल्चर का काम देख रहे हैं हमारे ऑफिस में, उनको हमने ड्यूटी लगाई कि आप एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जो है वो कंपाइल करें। हम अभी भी 45 बिल्डिंग्स बना रहे हैं इन द हरियाणा स्टेट, इन स्मॉल टाउन्स, वेरी स्मॉल टाउन्स, छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, बट उनको बनाना इज़ अ बिग चैलेंज। वहाँ यहाँ से 7 घंटे का सफ़र करके जाओ और बिल्डिंग इतनी छोटी, 3000 फुट की, 4000 फुट की, पेट्रोल ज़्यादा लग जाता है, पैसे कम मिलते हैं। तो संगीत होता तो फ़ोन ही नहीं उठाता ना। तो उसके बाद हीलिंग टच चैप्टर 8 में आता है। इसमें जो भी इंडिया में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, सरबजीत बागा वाज वर्किंग विद पंजाब हेल्थ कॉरपोरेशन, तो उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए। तो कुछ एक हॉस्पिटल्स हमें भी बनाने का मौका मिला, तो हमने वो सारे हॉस्पिटल्स जो है उनको इस चैप्टर में कंपाइल किया है। इसमें सारे जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने इसमें करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट प्लीज। अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स, वी नो हाउसिंग की बहुत सारी शॉर्टेज है पूरे इंडिया में, तो इसमें हमने जो भी खुद अपना काम किया अपार्टमेंट्स बनाने में, फ्लैट्स बनाने में, उसको इस चैप्टर में बनाने का हमने एफर्ट किया। तो इसको करने के लिए मैंने अपने बेटे डॉक्टर संजय बागा की ड्यूटी लगाई, और ये चैप्टर सबसे मुश्किल बना क्योंकि वो मेरे काबू ही नहीं आता था। तो वो पीछे बैठा हुआ है, पूछ लो, सबसे पूछ लो, उसकी माँ से पूछ लो, वेरी डिफ़िकल्ट। तो लेकिन जैसे तैसे करके हमने निभा लिया। तो नेक्स्ट प्लीज। देन हाउसेस, यू नो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के हाउसेस बनाते हैं लोग, राजरवाल साहब बनाते हैं, एस.टी. शर्मा सर बनाते हैं, और लोगों के बनाते हैं। छोटे कस्बे में बहुत कम बजट से कोई बिल्डिंग बनानी हो तो पता चलता है कि कितना मुश्किल है। तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मैंने उसमें ड्राइंग में बीम मार्क करके भेजा, तो मेरे को साइड से फ़ोन आता है कि बीम क्या होता है। तो ये समझ नहीं आया, कहते बीम क्या होता है। मैं क्या, बीम ऐसे ऐसे होता है। बोलते हमारे समझ नहीं आने का, इसकी फ्लैट स्लैब कर दो। दिस इज द कंडीशन ऑन ग्राउंड। नक्शा नहीं पढ़ना आता, दैट इज ऑलमोस्ट 70-80% लोगों की ये हालत है हिंदुस्तान में। तो उसमें हमने फिर बहुत सारे स्मॉल टाउन्स के रेजिडेंसीज वगैरह जो है उसमें फीचर किए। नेक्स्ट प्लीज। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर इज एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर। पीछे चलो। इसमें डॉक्टर मनीता सक्सेना, हु इज ए प्रिंसिपल इन IPS अकेडमी इन इंदौर, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, और इस चैप्टर को लिखने में जो भी आज तक और अगले 4-5 साल तक इस फील्ड में फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हुई है ऑन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, जो 5 साल बाद वहाँ से यूनिवर्सिटियों से होके मार्केट में आने वाला है, हमने वो सारा पिछले 200 साल से लेके आज तक सारे का सारा कवर किया है। एंड दिस इज माई चैलेंज दैट नथिंग इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर, सो ब्यूटिफुली रिटन। और इसमें आप देख रहे हैं बिल्डिंगों में विंड टर्बाइंस का यूज़ कैसे होता है, वेस्ट मटेरियल्स को कैसे यूज़ किया जाता है,
और जो न्यू मटेरियल्स अमेरिका में, जापान में रिसर्च किए जाते हैं, वो सब हमने इसमें फीचर किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक और चीज़ मेरे सामने आई, somebody phoned me from नोएडा some यूनिवर्सिटी। दे सेड के फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर पे हम कोई कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते थे, लेकिन सारा जोर लगा लिया, ना तो हमें कोई स्पीकर मिला, तो ना कोई हमें लिटरेचर मिला, ना कोई आर्टिकल मिला। तो हमने सोचा कि चलो इस पे भी कुछ गौर किया जाए। तो फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर पे हमने कोई 35 लोगों को कांटेक्ट किया कि हम इस पे कुछ आपके थॉट्स चाहिए। तो 16 लोगों ने ऑल ओवर इंडिया जो लीडिंग आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने मुझे अपने थॉट्स लिख के भेजे। हमने वो सारे थॉट्स इसमें इंटरव्यू किए हैं। वो जो थॉट्स उसमें आए हैं, उसमें एस डी शर्मा सर ने भी भेजे थे, और वी आर ग्रेटफुल टू स्मिथ मैम ने भी भेजे थे, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर 14 पीपल। तो इसमें हमने हाईलाइट किया कि जो फ्यूचर में हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड आ रहा है, और एक अमेरिकन प्रोफेसर है डेविड ब्राउन करके, ही हैज़ रिटन के फ्यूचर विल बी लाइक अंडरग्राउंड आर्किटेक्चर। सो उसका बहुत हिट एक रिसर्च पेपर है विच सेज दैट ज़मीन बहुत महंगी होती जा रही है, ऊपर जाना इज़ वेरी इनह्यूमन। अगर आप बिल्डिंगें अंडरग्राउंड बनानी शुरू करो तो दे आर कंपैरेटिवली बेटर। तो बहुत फेमस हुआ था उसका वो रिसर्च पेपर इंडिया वर्ल्ड में। तो वहाँ से क्लू लेके वो सारा मटेरियल इकट्ठा करके हमने फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर वाला जो चैप्टर है कंपाइल किया। इट इज़ रिटन बाय मेगा श्रोती, ए बॉम्बे बेस्ड आर्किटेक्ट। तो उसने बहुत सारा इस बुक पे काम करवाया है, और इस चैप्टर को लिखने के लिए मुझे लगता है कम से कम 3 साल लगे होंगे एक चैप्टर को लिखने के लिए। तो total it took us about 23 years. This book is a mixture of theory and projects and practice, everything is there. Next please. फिर we have ensured that जितने भी लोगों ने इस बुक पे काम कराया है, जब पिछले 40 साल में हमारे काम में हाथ बटाया है, हर उस बच्चे को, हर उस स्टूडेंट को हमने क्रेडिट दिया अपनी बुक में प्रॉपर। इट्स नॉट दैट कि बागा एंड बागा, नॉट दैट। We have given due credits to each student, each person who contributed in our working. So ये एक मैप लगाया है जिसमें हमने इंडिया में अपने कौन कौन से सिटीज़ में हमारे प्रोजेक्ट्स बने हैं, कौन कौन से गांव में हमारे प्रोजेक्ट्स बने हैं ऑल ओवर इंडिया, वो हमने इस मैप में मार्क किए हैं to show the presence that we have done so much work all over India. And with this note I close. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving an elaborate description of the entire book. There's a beautiful message by Dr. Sunita Vimal that I would like to share. Dear architect, author and guru Surinder Bahga, today is a special day as the day progresses to witness the wonderful occasion of the launch of the book, Form Follows Roots. I would like to express my special appreciation to you and all those involved in this extraordinary book. This is a unique compilation of contemporary Indian architecture. No one else has dealt so intensively with urban planning and architecture in the Indian subcontinent. So I would like to thank you for the 2 decades of this intellectual exchange. I am very proud to have met in life such a special person, and I never thought I would have the honor of writing the introduction to your book. This is by Dr. Sunita Vimal, who wrote the introduction of this book. We also have a message by architect Meenakshi Jain, Dean Research and Consultancy, Department of Architecture, NIT Hamirpur, who's also contributed a chapter. As an academician, I met Bagaji through the platform of IIA, wherein architect Bagaji tried to bridge the gap between academics and industry.
He also imparts training to the students and young architects on real-life problems of designing and construction activities, resolves their queries not only by conducting workshops, seminars, but also through offering internships and teaching them real architecture solutions. And myself, being from academia, I also feel that this book would receive an overwhelming response as it has received the support of Council of Architecture, as well as an approval to be circulated in all colleges of architecture pan-India. Moving to the finishing line, I would now request our Honorable Chief Guest, Sir, to please be on the stage for the felicitation of the contributors for this book. Sir, I would request Architect S.D. Sharma, sir. Architect Surinder Bahga, sir, to please be on the stage for the felicitation ceremony, sir. So I would like to first call upon the person जिसको सर से सबसे ज़्यादा डांट पड़ी. मैं सीक्वेंस थोड़ा घुमा रही हूँ. डॉक्टर सन्यम बागा. एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड योर पेन बिकॉज मुझे भी बहुत डांट पड़ती है कि डीन मैडम के पास टाइम नहीं होता, मैम फ़ोन नहीं उठाते. प्लीज़ प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. पर आई थिंक सर की डांट से मैंने बहुत सीखा है, एंड ही मस्ट ऑल्सो हैव. My first interaction over writing with sir was with as the guest editor for the JIA in 2015. So that was a wonderful experience, and I wrote a short editorial from the editor's desk. और उसमें भी आई थिंक 8-10 बार सर ने मेरे से रिविज़न कराई, और मैंने जब लिख के दिया ना तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा राइटअप लिख के दिया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. बट फर्स्ट रिविज़न, सेकेंड रिविज़न, थर्ड रिविज़न, बट thank you so much for teaching me, guiding me always. So, you would like to say something about your experience. For vote of thanks, I'll invite him later. I would also like to call upon stage architect Sarabjit Bahga. Architect Yashinder Bahga, sir. Miss Nav Sangeet Kaur from White Falcon Publishing, is she here? I would request you to. नहीं, आप आओ सर. Please, can I have the bouquets, please? I would request Architect S.D. Sharma, sir, to please felicitate our contributors. Architect Sarabjit Bahga, sir, please. Sir will have to come forward. Okay, table side पे करना है. Architect Yashinder Bahga, sir.
Miss Navsangeet Kaur, ma'am. Please, please. Dr. Sanyam Baga. And Sir has very rightly said that he has not forgotten even a single name to thank, to extend his gratitude. And you can see a list, a long list of names, in fact, in the entire book. And we are happy to also have architect Simran Saini among us. She's from Pune. She also contributed for the. Can you wave your hand so that everybody can see you? So, are you happy to be part of here today? Okay. So, with that, I would now request Dr. Sanyam Baga for vote of thanks and concluding remarks. Good afternoon, everyone. As you all know that this book is a concise history of modern architecture in India over the last three and a half decades. So I hope it serves its intended purpose. More than 200 people have contributed in compiling this book, and a care has been given to give credits to one and all in this book. We are thankful to all in general, and also certain some special personalities we want to thank for their extraordinary contributions. So firstly, I would like to propose a vote of thanks, and I would like to express deep gratitude to the members of Saakaar Foundation and of White Falcon Publishing for making this book possible in its current format. Also, we would like to thank Council of Architecture for their support. Special thanks to the great architect S.D. Sharma for sparing his valuable time for this book launch. Special thanks to all the authors, all the contributors of this book. And I'm also highly thankful to Harveen Bhandari ma'am, Dean Research and Scholastic Development at Chitkara University, for her considerable contribution to this book as well as for today's function. We are grateful to Mr. Amit Roy and Mr. Jasjot Singh for helping us arrange today's program. And also we like to thank all the personalities from print, electronic media and social media. So special thanks to all of you for spending around 2 hours of your valuable time with us today. Thank you all very much indeed. Thank you. Thank you so much. I also extend thanks to everyone, to one and all who's taken time to be here today. I conclude today's event by saying, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको घरना पड़ता है. And I hope sir will continue working the same way and keep involving me in every project that you do. I am being a little selfish, but because I get to learn. He's an excellent mentor for me. और एक और बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिनको हमने थैंक यू नहीं बोला और थैंक यू बनता है, जिनकी वजह से सर हमारे साथ हर जगह होते हैं. एनी गेसेस? Yeah, your family and Seema ma'am who's with us today. Thank you so much. Thank you.
The lunch is being served. I would request all to please have